Good evening, everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. It is indeed a massive win for Hindu devotees in the Kashi Vishwanath Mandir case, where they had sought daily rights to offer prayers to Ma Shringar Gauri on the compound of the masjid that stands there today. The maintainability of this plea was challenged by the mosque committee on the grounds that it is barred under the Places of Worship Act 1991. Now, with the district court in Varanasi dismissing that objection, the plea will be heard. Remember, Shringar Gauri worship used to happen unhindered till they were barred only post Babri Masjid demolition. Then prayers were allowed once a year from 1995. That barring of daily prayers as they used to happen well post independence is the act that was considered arbitrary and restricting the right to pray of the Hindu devotees. Even if you take into account the Places of Worship Act, the barring of the Shringar Gauri prayers were violative of even that act. As part of the plea, the larger question over the masjid itself, whether it was built after demolishing an ancient Hindu temple by Aurangzeb or not, will also become a subject matter. In short, the plea over prayers to Shringar Gauri has thrown open the entire Kashi case. Remember, a survey of the mosque has already taken place, with the purported shivling also being found in the Wazu Khana of the present-day mosque. All of this is happening when pleas against the Places of Worship Act in itself are being heard by the Supreme Court. Joining us in a short while from now will be the Hindu side lawyer Vishnu Shankar Jain, who's been at the forefront of the legal battle since the very beginning. But before that, let me take you through some of the key points that have come out after the order today. So here is the crux of the order, the operative part under which it was declared that the Hindu petition in this case is maintainable. The Varanasi court has declared that the plea is not barred by the Places of Worship Act. The court specifically held that since the Hindu deities were worshipped inside this masjid complex even after 1947, which is the cut-off date under Places of Worship Act, therefore that act will have no applicability in this case. The court has also ruled that the plea is not barred by the Waqf Act of 1995, and it is also not barred by the Kashi Vishwanath Temple Act of 1983. So these were some of the acts that were cited by the Masjid Committee. So what follows from here as far as the Gyanvapi case is concerned? First of all, the Shringar Gauri matter can now be heard on the merits of the case. That case actually begins now, and the arguments will start now. The 1991 petition in the Kashi case can also be heard further. Remember, this case, the Kashi Vishwanath case and the challenge to the mosque that stands today, dates as back as 1991. So it's almost as old as the Places of Worship Act. Finally, the Gyanvapi survey that has already been conducted and some portions of it were allegedly leaked too can now be taken on record and discussed as well. Remember, this case though also has wider ramifications. Let me just take you through that. Of course, the court will now hear the plea seeking the worship of the Hindu deities. The fact that they are asking for the compound access in itself is a big deal because, as I mentioned, it was barred in 1993. The court may also decide on the historicity of the purported shivling that has been found, and that in itself can have a massive bearing. We all know what happened in India and how many discussions happened when that shivling video came out, the purported shivling. Imagine if the authenticity of that shivling is established. But this case then also impacts multiple legal cases that are currently on in various other courts. There are actually 5 to 6 petitions in this case alone. There are cases pertaining to the Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura. And of course, the Ram Janmabhoomi has been settled, but there are Bhodshala cases, many other temple mosque disputes that have come up to court. Finally, it also bolsters the arguments against the validity of the Places of Worship Act in itself, which is already in court. So the big debate that's coming up today, the Hindu prayers have been answered as far as Ma Shringar Gauri case is concerned. Will this verdict on a maintainability order also set a precedent for the others? That's the big debate that's coming up. A lot of our guests joining us, but first, a recap of what happened today. प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है। आज दिए जलाए, शंख नगाड़े बजाए, हर हर महादेव का नारा लगाए रात के 8 बजे। आज बहुत बड़ी दिवाली है, आज शिव की नगरी में बहुत बड़ी दिवाली है।
फैसले का मैं भी स्वागत करता हूँ, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम ना करें। आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर फौरन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। First up, I want to go across to Vishnu Jain, who is one of the prominent lawyers on the side of the Hindu petitioners in this case. Vishnu, thanks a lot for giving us your time. Now, you were always very confident that the maintainability of the plea will not be under challenge. But give me a sense, what happens from here on? What is the significance, according to you, of the order that has been given today? See, the significance of the order is that so far as the misnomer of places of worship act was created in the society, that has been broken. So far as the misnomer of application of Waqf Act 1995 is concerned, that has been broken because it is proved to hilt that places of worship act is not a blanket bar for restoration of such kind of cases, and on the individual facts of the case, the places of worship act will be attracted. So if we have said in our pleadings and in our petition that till November 1993 there was puja which was happening at the premises in question, then the places of worship act will not bar the suit, rather it will facilitate the suit. Yeah. So these are the factors on which this aspect will be considered. No, so that's exactly the thing, right? In this case, there is a clear marker that post 1947 too, there was a puja happening which was stopped post 1992 Babri Masjid demolition on the basis of law and order concerns or whatever. But keeping that in mind, do you believe that this verdict would have any precedent in any of the other cases that are also related to Gyanvapi Mosque and other places of worship as well? See, obviously, a verdict passed by a district court in a given set of facts of the case, it will not be a precedent, but definitely it will have a persuasive value, because persuasive value can be seen from various aspects of the matter, that it is like a precedent so far as first time this issue has been considered in such a large scale, that whether the places of worship act is attracted or not for restoration of temple. So it's like an example, it's like having a persuasive value when these kind of matters will arise in the future for other temples restoration. Yeah, but I insist again that this case is slightly different because prayers were already happening post 1947 and therefore there's a clear distinction. But tell me, Vishnu, what happens next? There is a plea regarding daily prayers that are to be offered to Shringar Gauri, but there's another plea which has been pending since 1991 that wants the entire complex to be given to the temple side and the mosque to be done away with. Does this order have a bearing on that 1991 petition? See, this verdict is only given in the case of right to worship plea filed by these 5 women devotees. It has no bearing on the other 5 petitions till the matter is tagged along with that. Okay. That is point number 1. Point number 2 is that we have specifically said in our plaint that there are objects of worship existing till November 1993 in the premises in question. And therefore, the Honorable Court today has said that the suit is maintainable, and they have asked the Muslim side to file their written statement before 22nd of September of this year. So I am hopeful that this matter, we will definitely pray to the Honorable Court that in future there should be a fast-track trial of the matter in issue. And apart from fast-track trial, there should be day-to-day trial of this case, so that as soon as possible we can bring a final verdict of this matter before the devotees. Okay. Tell me one more thing. That survey that was conducted under the aegis of the court was also widely discussed across India. What happens to that survey now? The survey was ordered in this case only. It has been filed as a part of record before this Honorable Court, and therefore now in future the Muslim side has been given 2 weeks time to file their objection to the survey. They have not filed any objection. So the survey report will become final and it will have a bearing as an evidentiary value under Order 26, Rule 9 and 10 of the series. I believe you've also asked for further tests to be conducted on whatever has been found under that survey. You want carbon dating, etc. to be done. Can you please enumerate to me what your demands are on the survey?
See, now the survey has been done. We had moved an application and the writ petition before the Honorable Supreme Court seeking carbon dating of the Shivlingam which has been found. Now the Honorable Supreme Court directed us to file this application before the trial court. So we'll be filing that application soon before the trial court, and we have also filed an application removal of those artificial walls which are present beneath this Vazukhana. So those artificial walls will be removed. The Arga of the Shivlingam will be found, and then in future we'll proceed further in this matter. So virtually, I mean, frankly speaking, Vishnu, the final and ultimate aim in this case, whether it is the Shringar Gauri case or the 1991 petition through this petition or earlier petitions, is that the mosque should be removed and the entire complex should be given back to the temple, right? First of all, it's not a mosque at all. If you enter into the premises of temple and offer namaz and give it a shape of a mosque, it can never become a mosque. So we will be re-entering into our temple and doing shuddhi and doing worship. It can never be a mosque. I can never call it as a mosque in my life. And this is what Deen Muhammad judgment has said, that if you demolish place of worship of another religion, it can never be a valid mosque under Islam. But that's what I'm saying. That's the final aim though. Because the 1991 petition also wants that the mosque should be done away with. Is that something that you will also join forces with? Let's say after the Shringar Gauri case is decided. Definitely. We have filed title suit. There are 6 suits filed by us which are pending in Varanasi Civil Court. This is a petition for right to worship. We have claimed title also of the entire premises in question, and the final aim is to get our possession and get the place of our deity back. All right, Vishnu Jain, I do appreciate you joining us. It's been a fabulous day for you, so congratulations on that, and thanks a lot for giving us your time. Let me open this up to our other guests joining us. In fact, Hari Shankar Jain, who's father of Vishnu Jain and one of the senior advocates on the Hindu side, is now joining us live. Madan Mohan Yadav is also the advocate on the Hindu side as far as many of the petitions are concerned. Sita Sahu is one of the petitioners, the devotees in the Gyanvapi case. Tausif Ahmed Khan is advocate, political analyst. Haziq Khan is Islamic scholar, and Sangeet Kumar Ragi is RSS thinker. They too are joining us in our studios. Let me go across to Hari Shankar Jain first up. Sir, the larger question on the minds of everybody today is, what is the greater implication? Yes, the Shringar Gauri case will be heard and matter will proceed on the merits of the case now. But what do you feel is the greater, larger ramification and significance of today's order? One thing is certain, that the objection raised by other side, that this suit is not maintainable because of the alleged admissibility of Place of Worship Act. That has been rejected, number one. What the ground of rejection are, that there are ample evidence mentioned in the suit itself, that there were puja of deities were going on at the place in question. A number of deities were there. Since 1993, puja was being performed. Mulayam Singh government, to appease Muslims due to political reasons, ousted Hindus after barricading, fencing the entire premises. The puja going on was stopped. Not only that, Vyas the Pujari from Tehkana, he was also ousted, and puja was reduced to 1 day in the year. Amma Shringar Gauri puja was allowed only for 1 day. This is the scenario, and this is the pleading. The question is, the other side, without rebutting this fact, that no, there is no place of worship, no puja was going on. It was not a temple, it was always a mosque. They have not said so. Our clear pleading is, after demolishing Hindu temple by Aurangzeb, the alleged mosque, a construction was raised, and that construction cannot be termed as mosque, because after demolishing Hindu temple, if something has been constructed, that can't be a mosque. So that becomes a larger argument, ना जैन जी, वो तो larger argument हो जाती है कि मस्जिद को आप recognize करोगे ही या नहीं करोगे, वो तो larger argument हो जाती है कि आपको लगता है वो that larger argument also has gained strength today in the overall Gyanvapi case. That is primary thing, not the larger issue. Question is that it can't be a mosque.
how it is a mosque. Firstly, you have to see that it is not a work property. No work was created. There is no work deed. These are all the issues involved in this petition. And I filed 6 cases, not only 1, 6 cases. It is one of the cases. And other things are title suit also there. That's So what it I'm saying. will This is one of govern the cases. All yes. the cases. So are you now confident that the larger case, So it had to- that this land should be given back to the Hindus to rebuild the temple? Do you think that case has become strengthened today? No, I am saying that title dispute will be decided in another case. Right. That is connected case. Right. Here is, in this case, the puja of Ma Sringar Gauri, Lord Ganesh, Lord Hanuman, and other devotees, visible and invisible devotees. Ji, ji. That is there. Number 8. You will find that Shivling, which was discovered by Advocate Commissioner on 16th May, that will also come on the board, and it will be decided what is this, and we will pray that is part of this temple. All these things will be decided. You will pray that that is part of the temple. तो बात तो वही हो गई ना कि जो आज के मस्जिद का जो एरिया है वो टेम्पल का ही एरिया है. यही जो लंबी लड़ाई तो वही है ना हरि जी. मैं क्षमा चाह रहा हूँ आप लोगों के जितने लोग हैं उनको पूरे देश में एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मस्जिद है. मस्जिद और वक्फ बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है. अरे भाई पहले पूछिए तो इन मान्यवर लोगों से कि मस्जिद कैसे है. कोई इस्लाम को जानने वाला जी है. कभी नहीं कह सकता कि बिना वक्फ हुए मस्जिद हो सकती है. नंबर 1. मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती क्योंकि 2 कारण हैं. हिंदू लॉ में once a temple, that is always a temple. Once property vested in the deity, that will continue to be deity's property from the last day of judgment. Number 1. If it is a work property, so work, it must belong to Waqif. Waqif means there should be a Muslim, a person who has dedicated the property to Allah. Tell me, who has dedicated the property? If there is any dedication, and if there is no mosque, there is no mosque. So why you have created, forcibly took possession, constructed some construction and saying it is mosque? So in the name of mosque, you can't continue in possession. You are usurper, you are encroacher, and that encroachment is legally not permissible, and nobody can rectify that illegal action. That is Even the Places case. of Worship Act, you are saying, will not become applicable in this case. Are you saying that? Yes. That is one of the pleading. Places of Worship Act is not applicable because since 1993, puja was going on. नहीं, वो तो श्रृंगार गौरी वाला केस है. उसमें तो क्लियर है कि 1947 के बाद भी पूजा हो रही थी. मैं लार्जर ज्ञानवापी मॉस्क का जो मुद्दा है उस पर बात कर रही हूँ. आपने सवाल उठाया कि ये मॉस्क है ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट है. मेरे साथ हैं मिस्टर खान, हजीक खान, जो इस्लामिक स्कॉलर है, मौलाना हजीक खान. मैं उनको इस डिबेट में इन्वॉल्व करती हूँ. क्या हरिशंकर जी जो कह रहे हैं, क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या सबको नहीं दिखता कि मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाया गया था? देखिए मैडम, हिंदुस्तान के जब इतिहास को तलाशा जाएगा तो ये मस्जिद की कम से कम 600 साल पुरानी मस्जिद बनी हुई है. इस अल्तमश ने बनाई, फिर मोहम्मद गौर ने बनाई, फिर हुसैन अहमद एक नवाब थे उन्होंने बनाई, फिर अकबर ने जब मंदिर बनाया जो आज बनारस में है मंदिर, और टोडामल और मानसिंह ने उस मंदिर को डेवलप किया, उसी के साथ मस्जिद को बनाया. ये जो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, इसका नाम है रजिया मस्जिद. ज्ञानवापी मोहल्ला है, ज्ञानवापी वहाँ एक कुआं हुआ करता था. रही बात ये कि उसके बाद औरंगजेब ने उसको डेवलप किया. मस्जिद थी वो, और मस्जिद मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि हिंदुस्तान में जो बादशाह हुक्मरान हुए जिनके ज़माने में 37% GDP थी इस मुल्क की, क्या उन्हें खाली जगह नहीं मिलती थी जहाँ मस्जिद बनाते? खाली मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की, मैं इस्लामिक एक बार इस्लामिक एतबार से वो मस्जिद नहीं हो सकती जिसमें किसी की नाजायज कब्जा करके मस्जिद. हाजीक जी, आप ज्ञानवापी जो आप कह रहे हैं रजिया मॉस्क है, आप सही कह रहे हैं, ज्ञानवापी उसका नाम नहीं है.
उसकी आप दीवारें देख लीजिए, क्या वहां पता नहीं चलता कि मंदिर तोड़ के बनाया गया है? मैडम, जब अकबर ने दीन इलाही शुरू करा, इतिहास को टटोलना पड़ेगा, उसके तथ्यों को अंदर जाना क्या पड़ेगा। दिखता नहीं है अपने, हमें अपनी नजरों मैं से नहीं बता दिखता रहा है? हूँ, तो जब अकबर ने उसको डेवलप किया, टोडामल मान सिंह ने, तो उन्होंने दीन इलाही आप चलाया। अकबर का नाम ले रहे हैं, औरंगजेब का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पहले बता रहा ना, उससे पहले दीन इलाही वहां से चला, वो मरकज था, सेंटर पॉइंट था दीन इलाही का प्रचार का। वहां से सारे मजाहिब के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे मजहब की, और वहां पर जो आप कलाकृति बताती हैं कि वो वहां पर लगी हुई हैं, वो इसलिए जैसे कि अकबर ने सारे मजाहिब को लेकर काम किया था। सर, और ऐसे मॉस्क नहीं बनता है, आपको भी पता है, और भारत में आपको ऐसे कोई मॉस्क नहीं मिलेगा। दीन इलाही पढ़ लीजिए कि दीन इलाही पे क्या करा। आप मूर्तियां लगाते हैं मॉस्क में, आप ये कह रहे हैं मुझे? नहीं, दीन अकबर ने करा, और नहीं लगा था अकबर, क्योंकि एक दीन इलाही मजहब चला रहा था, सारे लोगों को मजहब लेके, तो सारे कोर्ट में मजाहिब तो ये जो मुस्लिम पक्ष है उसने तो अकबर का नाम नहीं लिया, वो तो औरंगजेब का नाम लेके गए। औरंगजेब का प्रचार करते हैं लोग। औरंगजेब ने डेवलप किया, मस्जिद बनाई नहीं औरंगजेब, पहले ऑलरेडी मस्जिद थी, टर्की नवाब ने बनाई पहले, उससे पहले ना, उससे बनाई अल्तमश ने, उससे तो पहले। आप ये कह रहे हैं यहाँ पे मंदिर नहीं तोड़ा गया, ये कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम आपसे भी, और अपने भाई जो बैठे हैं प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि इतने मूर्ख थे क्या वो बादशाह जिन्होंने जीडीपी जो अपनी तो उनके जो औरंगजेब के इतने सारे जो फरनामे हैं और वो हैं जिसमें उन्होंने हजारों मंदिर मथुरा के मंदिर को, जो आज भी मथुरा के मंदिर में जो, मथुरा की बात नहीं करते हम, ज्ञानवापी की बात पहनते हैं अपने, जब उनका वो मेला लगता है तो उसमें गहने वही पहनते हैं जो औरंगजेब ने दिए, इंदौर के मस्जिद को भी दिए, आसाम में भी। मुद्दे की बात यह है कि वहां मंदिर तोड़ के बनाया गया, नहीं बनाया मैडम, क्या जरूरत थी उन्हें मंदिर, क्या खाली जगह नहीं? हमें नहीं पता क्या जरूरत थी, पर सबको पता है कि औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े हैं, उससे पहले बाबर ने हजारों मंदिर तोड़े हैं। बाबर 4 साल हुक्मरानी, हजारों मंदिर तोड़ दिए मैडम, 4 साल हुक्मरानी। मैं अपनी बात रख लूं फिर आप बोलेगा। इस्लामिक इन्वेडर्स ने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है। इसमें मतलब हमें बहस करते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि हम हिस्ट्री के वो ज्ञानी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में लिखा है ब्रिटिश के जमानों से, और उसके बाद तो बहुत हिस्टोरियंस ने भी लिखा है। राम जन्मभूमि में भी यही मुद्दा बनाया था मुस्लिम पक्षकारों ने कि मंदिर था ही नहीं, मंदिर के अवशेष मिले। यहाँ पे तो सर ओपनली दिखता है। संगीत रागी, look, there is a scholar who has written a work, Negationism in India. It's a title of the book, and this has come out from the Voice of India, and in which the author argues the same thing what you are talking about. Denial of history. The denial of the history, right? So there is this is a fact. It is not only in India, but everywhere, wherever the invaders went, the Islamic invaders, they destroyed who were doing the Buddha Parasti or image worshipping. And here also, wherever they went, you will be finding that since the impact of Islam was not very high in southern India, you will be finding that the temples are existing. But wherever in the where their power was, their consolidation above the empire, so they demolished all the temples, barring few, left out. सोमनाथ का यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, क्या हम ये डिनाई करेंगे कि सोमनाथ को गिराया गया था? Shivani, in case of Ayodhya, it was every time asked that is, show me where is the evidence where has been stated that a temple has been demolished. Fine, that has been now settled by the court. That only 3 temples were being asked initially by the Hindu leaders. In this case, and particularly in this case, Kashi Vishwanath temple, and in case of Mathura temple, there is farman of Aurangzeb that we have demolished it. And thereafter you want to secularize it, you want to portray that no, it was the Deen-e-Ilahi, that a kind of a syncretic tradition that was initiated by Akbar, that reflected into the creation of mosques side by side. सिंपल सी बात है कि वहाँ मंदिर था या नहीं था, सबको दिखता है वहाँ मंदिर था। शिवानी, एक बड़ा और सोचने की बात, 1500 से पहले की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, वहाँ पे हजारों साल से मंदिर था। शिवानी, इस देश में भगवान शंकर, भगवान कृष्ण और भगवान राम, ये 3 ऐसे आराध्य हैं जो भारत की पूरी सनातन परंपरा के स्तंभ और आध्यात्मिकता है। मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या है कि तीनों के बर्थ प्लेस पर ही ऐसा काम किया गया? वो तो हमें पता है कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने क्यों किया, हाँ। लेकिन बात मुद्दा ये है कि अब क्यों उस पे लड़ रहे हैं? देखिए, हाजी खान, मैं एक और सवाल उठाता हूँ। जो लोग कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, नाउ द हिंदूज मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन that if you look at Bankim is saying the entire medieval period is a chronicle of rape and plunder of rape of
Hindu women, plunder of our temple, destruction of our temple. This is the chronicle of this is the historiography. This is the reality of the day. And Bankim was not, fortunately, the member of the RSS or Bharatiya Jansangh or Bharatiya Janata Party way back, long back. The point is that what the Hindus got after 1947, are they not entitled to their temple, to places of worship, to the and places? especially Why they sites like shouldn't? these, which are of extreme And importance therefore, to the I'm faith. saying that 1991 Act, Worship Act, piloted by the Congress Party and passed by the Parliament, was an insult to the Hindu deities. So that's a It separate was debate. I'm not getting into Yeah. that. Haziq ji, very quickly, I'll go back across to Hari Shankar. आप कह रहे हैं कि यहाँ टेम्पल नहीं था, क्या ये डिनाइल हो सकता है? देखिए मैडम, हिंदुस्तान में जब 850 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की, हाँ। तो जैसे आज हमारी पुलिस हिंदुस्तान के मुसलमानों की और जितने नागरिक हैं उनकी देखरेख करती है, तो क्या जो मंदिरों के बीच में जो मस्जिदें बनाई वो इसलिए बनाई? हम भी इतिहासकारों को पढ़ते हैं। डॉक्टर पूनिया जो हैं, राम पूनिया जी, वो बयान कर रहे हैं, रोज बयान करते हैं टीवी पे। नहीं देख रहे लोग हमारे, झूठ बोल रहे हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं अकबर वहाँ का बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में उसका वो रखे हैं औरंगजेब के, उसमें लिखा है किसी मंदिर को तोड़ के मत, बाबर का जो रखा है बाबरनामा, उसमें लिखा है उसने औरंगजेब को, उसको अपने बेटे हुमायूं को, कि तुम जिस मुल्क में हुकूमत कर रहे हो उसके हिंदू भाई क्या तुम्हारे। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपको लगता है ज्ञानवापी में मंदिर तोड़ा गया था या नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा गया मैडम, नहीं किया। चलिए हरिशंकर वो जी, मस्जिद बनी नहीं सकती मेरे एतबार से, इस्लाम के एतबार से। बात तो वही है, लेकिन लड़ाई तो राम जन्मभूमि पे भी हुई। नहीं, रामचंद्र भूमि भी नहीं, तो लड़ाई तो यहाँ भी हो रही है, लड़ाई तो मथुरा में भी हो रही है, सबको पता है हिस्ट्री क्या है, तो क्यों लड़ाई हो रही है? एक में आनंद डायरेक्टर हिंदुस्तान के थे, जब राम पर उन्होंने रामचरित मानस सीरियल बनाया, तो अयोध्या की, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, अयोध्या में उन्होंने दौरा किया। 55 मंदिरों में लोग कह रहे थे कि यहाँ राम जी पैदा हुए। क्या बात करती हैं आप उसमें मत जाइए, यहाँ मंदिर रामचंद्र जी के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो मंदिर के पुजारी कह रहे हैं यहाँ पैदा हुए। हरिशंकर जी wants to respond, then I'll take go to our other guest. Yes, हरिशंकर। देखिए, you can not be fool the people now. You cannot be fool. The question is that there is ample evidence to the effect that during Mughal rule, Islamic rule, from Alauddin, from Muhammad Ghori till 1947, whosoever had been the Muslim rulers, they have committed atrocities, barbarous acts, action which is most inhuman, and it can't be justified. मुस्लिम रूलर से ज्यादा अन्याय, क्रूरता और बर्बरता किसी ने नहीं की, और उन बर्बरता को फिर से रेक्टिफाई करना आज हिंदू जनता की पहली 70% लोग हिंदू के साथ थे हुक्मरानी में। कैसी आप बात कर रहे हैं? कैसे थे वैसे ही थे, मानसिक कैसे थे, टूडामल कैसे थे, ये सब सारा कन्वर्जन आपने किया। मान सिंह ने कन्वर्जन किया, चुने गए, मान सिंह ने कन्वर्जन किया, टोडामल ने कन्वर्जन किया, जोधाबाई ने कन्वर्जन किया। आज भी आगरे में अब मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा, प्लीज अब बीच में ना बोलिए। तौसीफ अहमद, द लार्जर क्वेश्चन फेसिंग द मुस्लिम कम्युनिटी is it helping them to fight these battles and go to court and say there was never a temple here? Or would it be better if they also acknowledged the real facts of Indian history and then try to work out a solution? And there are, of course, there's a discussion, of course, of the bigger sides. The smaller matters can be maybe decided by court, but on the bigger sides, is it looking good that the Muslims are denying that the faith of the Hindu community was demolished here? I've understood you. Madam, I've understood your question. I've been hearing the concocted... All right, finish. Now I've finished it. Tausif, no need to get impatient. Go ahead. All right, now you please give me uninterrupted 2 minutes, like you have given uninterrupted several minutes to RSS supporters and to BJP supporters. Now, exactly. Once again, whose supporter are you? Since you are outlining RSS and BJP supporters, whose supporter are you? आप भी बता दीजिए. I am anti-RSS and anti-hate. That should suffice. Yeah, that's a self-certification you have given to yourself that you are anti-hate. ये सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिला है कि आप anti-hate हैं? चुप रहे ना मैडम, चुप रहे थोड़ा. नहीं, तौसीफ बदतमीजी मत कीजिए. तौसीफ बदतमीजी मत कीजिए. तमीज से बात कीजिए. 2 मिनट चुप रहो, बैठो. 2 मिनट चुप बैठो. तौसीफ तमीज से बात कीजिए.
और दूसरों पे इल्जाम मत लगाइए, आपको अपनी बात रखनी है तो रखिए। अरे मैडम प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। I will interrupt if you act smarter. Don't act smart with me. You will give me 2 uninterrupted minutes. I will give you time. I asked you who compulsion. gave you the certificate of being anti-hate. कहाँ से मिला ये certificate? I know you are a Hindu. You will take Hindu side. You will say You will can say want to whatever you believe the want. Hindu version. ऐसे तो मैं But that is not आपके truth. रिलीजन पे भी That बोल is सकती हूँ not और मैं the नहीं truth. बोलूंगी। तो सिर्फ आप तमीज से बात कीजिए और आप अपने टेम्परामेंट What is this, madam? Please आप अपने keep your- टेम्परामेंट please को don't कंट्रोल interrupt. करिए। आपके यहाँ पे एलिगेशंस Enough. और Now let हॉटीनेस me लेने speak. के लिए भी यहाँ कोई नहीं Are you बैठा है। done? आपको Are you जरूरत done? ही Now- नहीं थी किसी और गेस्ट के ऊपर कमेंट Are करने you की। done? Now keep quiet, madam. नहीं नहीं, आप Just तमीज listen. से बात कीजिए पहले। Now just listen. There are ज्यादा two दोस्त मेरे को aspects. मत अरे दिखाना। बाबा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज keep हु इज गोइंग टू quiet. गेट अफ्रेड ऑफ दिस। आप तमीज से बात कीजिए पहले। अरे you are one of those who will lose your job as soon as the government falls. ठीक Now है, तो there are आपको इतनी two चिंता versions क्यों to है? this. मैं वही पूछ रही हूँ, आपको Now नौकरी there कौन are दे रहा two है? versions तो सिर्फ because आपको you are नौकरी कौन spreading दे रहा है? आप hatred and बताइए ना। lies. दूसरों तुम की झूठ दूसरों बोलोगी। की नौकरी पे आप बात कर रहे हैं, आपको नौकरी कौन दे रहा है? बको। बकली। अगर बकली हो तो मैं नहीं बोलूंगा। आप There are ज्यादा two चौड़े versions. मत होइए, तौसीफ तमीज से There बात are two कीजिए। versions. आपकी There गाली are सुनने two के लिए कोई नहीं versions. बैठा यहाँ पे। अरे समझ में बाबा आ गई there ना? are two versions. Does he wants to come in? What do two you want to versions. say? अरे बकली हो अभी चुप रहो। Two versions. अपने टॉपिक पर रहिए। One is about हाँ, history and the other is about the legal aspect. Now the historical aspect, the recorded history. You have talked about Aurangzeb. It is not the advocate who is Why talking. It is the interrupting Muslim me? who is talking. Now Tausif is a Muslim. And he is a radical इनको Muslim. बोलने दीजिए, आप इनके लेवल पे मत He is a radical Muslim and that is why he is talking like this thing. ओके चलिए तौसीफ। He is not a political analyst. Don't forget about that. He is a political can I analyst. just allow him to We allow finish him. his point? तौसीफ। अरे Ragi is a WhatsApp university chhatra. I Oh, know him come very well. on, baby. Now Come on, demolish- baby. संगीत रागी, Now- I'm requesting you. You please don't get into this. I am talking. Don't get into this. If he wants to maybe make some allegations against me, you don't get into it. He is a radical fanatic Don't get into it. Sangeet Ragi, I'm requesting you. Yes, Tasi, what is it that you want? to say? We have lost already 2 minutes because you have been interrupting. That's now, fine, please but you do don't not dare interrupt. make Do not allegations interrupt. against other members of do the not panel. It interrupt. is as I'm simple as asking, do that. not आप किसी हाई हॉर्स अरे पे नहीं बाबा, बैठे do हैं, not आपको नहीं interrupt अलाउ ना। करूंगी मैं। आपको अपनी बात रखनी थी, आप रख सकते थे बिना किसी गेस्ट के अगेंस्ट कुछ बोल के। मैडम रुको। रजीक जी भी बैठे हैं, वो भी अपनी बात कर रहे हैं। डिबेट करने आए हो, डिबेट करो। ज्यादा अपने हाई हॉर्स पे मत अरे बाबा बैठो। मुंह बंद करना रे बाबा। 2 मिनट मुझे दो। नहीं, इनको एक निकालिए। है हिस्टोरिकल Tasi, you have एस्पेक्ट। absolutely lost your balance today. This चुप रहिए, मुंह बंद रखिए, इस तरह की भाषा हमारे यहाँ नहीं बर्दाश्त होती। आप तमीज से बात कीजिए। मदन मोहन भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मदन मोहन, आपको क्या लगता है, आप भी एक पक्षकार हैं, क्या जो लार्जर फाइट है ज्ञानवापी मॉस्क की, क्या आपको लगता है कि वो फाइट बढ़ेगी अब? जी हेलो। हाँ जी मदन मोहन जी बोलिए। जी मैं सुन रहा हूँ। जी बोलिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आज का जो मेंटेनेबिलिटी का ऑर्डर आया है, आप उसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? इसका बड़ा दूरगामी हमें दृष्टिगत हो रहा है जो परिणाम होगा, और ये निर्णय माननीय जिला न्यायाधीश वाराणसी का, इससे जितने भी हमारे विवादास्पद मंदिर रहे हैं, जहाँ पे भग्नावशेष हैं, उसके आज भी प्रमाणिक स्थान हैं। पूरे देश को, करोड़ों देश के हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को सांस्कृतिक धार्मिक न्याय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। और इसको, जहां तक ज्ञानवापी मस्जिद का विषय है, ये मस्जिद नहीं मस्जिद है, और उसके पार्श्व भाग में मंदबुद्धि का भी व्यक्ति यदि खड़ा होकर देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो नागर शैली का भग्नावशेष मंदिर का है। इसलिए ये जो भी दलीलें दी जा रही हैं मूर्खतापूर्ण हैं, और इनको अगर ऐसा ही है तो पूरा सर्वेक्षण करा लें, मालूम हो जाएगा, और कार्बन डेटिंग हो जाए जो हमारे पूज्य शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इस नाते ये कहना मूर्खतापूर्ण है। आज माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है बहुत ऐतिहासिक है। इससे पूरी काशी ही नहीं, संपूर्ण जो धार्मिक जगत है भारत का, वो अति प्रसन्न है। और भविष्य में ऐसे ही विवादों का, जो कि सांस्कृतिक धार्मिक न्याय का विषय है, उस पे हमें मार्ग निष्कंटक हो रहा है। उसके लिए हम आज अत्यंत जो प्रसन्न बाकी हैं। जो मुद्दे हैं, जो लार्जर मुद्दा है मदन मोहन जी, उसमें तो अभी भी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा ना। इस केस में तो एक स्पेसिफिक इशू था कि 1993 के बाद पूजा बंद की गई, तो बहुत इजी हो गया केस, लेकिन बाकी किस्सों में वो केस इजी नहीं है। नहीं, इसके लिए हमारे मित्रों ने
सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका दाखिल की थी और ये संविधान सम्मत नहीं है। ये अधिरोपित अधिनियम है। जी जी, अनुच्छेद 25 इसके खिलाफ है। तो संविधान की जो मूल भावना उसके विपरीत यह जाता है। ये एक अल्पकालिक तत्कालीन लोगों की मानसिकता को पुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए राम जन्मभूमि के मामले पर जो आंदोलन चला था उसी को देखते हुए ये लाया गया था, परंतु ये दीर्घकालिक नहीं है। संविधान की मूल संविधान की जो मूल so the larger fight now hinges on the Places of Worship Act, but in the meantime, remember two things. Supreme Court has once said that determining the character of a religious place is not barred under the 1991 Places of Worship Act. Secondly, the act itself is under question. And thirdly, now in this case, the maintainability of the plea has been given a go-ahead, and the Shringar Gauri case can have wider ramifications, as all of our advocates are pointing out. Sita Sahu is one of those devotees, the petitioner in this case. Sita ji, आप बताइए, आपका मन क्या कह रहा है? आज आपकी जो प्ली थी, अब उसका रास्ता साफ हुआ है। जीते नहीं है आप, लेकिन उसका रास्ता साफ हुआ है। जी, आज हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा ही खुशी है कि एक रास्ता मिल गया है। कम से कम अब हम लोग जो है आगे की लड़ाई लड़ सकेंगे। आगे जो हम लोग को मिला है सबूत दिखाया जाएगा। आगे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इसके लिए हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। आपसे लोग जानना चाहेंगे सीता जी कि ये जो श्रृंगार गौरी माँ की पूजा के लिए आप जो गई हैं, आपने जो याचिका फाइल करी है, वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? आप क्या कहेंगे उस पे? मैं यही कहूंगी, कभी देखिए, कभी तलवारों के दम पे हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, उसको ध्वस्त किया गया था और ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम मचाया गया था। ये हम लोग को पता है, ये इतिहास गवाह है। हम लोगों के और उसी दौरान जो हम लोग मेन मंडप है माँ श्रृंगार गौरी का, उसको भी ध्वस्त किया गया था। वहाँ पूजा पाठ बंद हो गया था, बाद में पूजा पाठ शुरू हो गया, फिर 91-92 में फिर दोबारा से बंद हो गया था। साल भर में मात्र एक बार पूजा करने का अवसर मिलता था, और वो भी मंडप के बाहर, जो कि चबूतरा कहलाता है। लेकिन हमारी मजबूरी थी, मात्र 1 घंटे के लिए नवरात्र के चौथे दिन मात्र 1 घंटे के लिए पूजा पाठ करने का अवसर मिलता था, वो भी चौखट पर, जिसमें भीड़ भाड़ धक्का मुक्की सब होता था। इसी से हम लोग परेशान होके हम लोग ने याचिका दायर किया था। अब हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा, हम लोग का मंदिर मिलेगा, जहां हम लोग अभी जो बाबा जी मिले हैं वहां जाकर हम लोग जलाभिषेक कर सकेंगे, माँ श्रृंगार गौरी का भी पूजा पाठ कर सकेंगे। जी, तो आप भी यही मानती हैं कि जो आखिरी लड़ाई है वो ये कि वो जो मस्जिद का जो इलाका है वो मंदिर में मिलेगा? लेट मी गिव द फाइनल 30 seconds टू हरिशंकर जैन। सर, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू ऑफ दैट लार्जर फाइट? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है। वी विल प्रूव दैट टेम्पल वाज डिमोलिश्ड। आई मे रिमाइंड वन थिंग एंड टेल यू टू ऑल दैट देयर इज 1997 जजमेंट of the Supreme Court. Justice Ramaswamy की जजमेंट है 1997, 6 Supreme Court cases, page 461. You will find Supreme Court has recorded finding that this temple was existing at the time of Aurangzeb. Under the order issued by Aurangzeb, this temple was demolished. Once I prove that this construction has been raised after demolishing a temple, it can't be a mosque. You can't say it is a mosque. Neither under Hindu law, neither under Muslim law, it can be a mosque. Okay. If it is not a mosque, it is an encroachment. So encroachment is not permissible. In Ajodhya case, I was counsel in Ajodhya case, 5 judge bench has held that even if temple is destroyed, it can be restored. Okay. ऐसा नहीं है कि आपने तोड़ दिया तो मंदिर समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। और लॉ के डायमेंशंस, देयर आर नंबर ऑफ डायमेंशंस. And we all now look forward to that larger fight. First, of course, is the Ma Shringar Gauri worship case. Then, of course, the larger case of the Gyanvapi Mosque. Then there is also case of Kashi Mathura. And who knows what happens to Places of Worship Act and whether more of these battles come out in the open. Some of them are already in court. I've run out of time. I do thank all of our guests for joining us.